Hello students, welcome back again. So students, in last class we had learned the noun and its types, and in this class we will discuss each types of noun. Okay, so let us revise what we learned in last class. In last class we learned noun. So what is a noun? A noun is the name of a person, place, thing or animal. Example, Ria and her dog are going to the market to buy a toy. Okay, so Ria is the name of a person, dog is the name of a animal, and market is the name of a place, and toy is the name of a thing. Okay, so what we learned in last class? We learned that there are 5 types of noun: proper, common, collective, abstract and material. Okay, now we will discuss each type of noun. First is our proper noun. So what is a proper noun? Proper noun refer to the name of particular thing, place or person. Example, Sita lives in Kolkata, Maya goes to school, Hari is a boy, Taj Mahal is in Agra. So students, proper noun उस noun को हम बोलते हैं जो particular होता है, means specific होता है, special होता है, जिसका कॉपी नहीं होता. ठीक है. Here Sita is a special name of a person, and Kolkata is a city name. Okay, and here is a Maya is a name of a person, and name of a person is a proper noun. And you should know that proper noun always start with a capital letter. Okay, proper noun always start with capital letter, whether it written in starting of the sentence, middle of the sentence or end of the sentence. Okay, now come let's know what is a common noun. Common noun refer to the common things, places or person. Example, Ali broke my cup. Number 2, my mother is a teacher. Number 4, Kolkata is a city. Number 4, he works in a hotel. सो स्टूडेंट्स, कॉमन नाउन हम कॉमन थिंग्स को बोलते हैं, जो कॉमन थिंग्स हो, कॉमन प्लेस, कॉमन पर्सन, जो हम हर जगह यूज कर सकते हैं. ओके, जैसे अली, अली को हमने सर्कल नहीं किया, क्यों? क्योंकि अली एक पर्टिकुलर नेम है. बट कप इज अ कॉमन थिंग. ओके, हेयर मदर, योर मदर नेम इज कम इन प्रॉपर नाउन. बट व्हेन वी से मदर, सो सबकी मदर होती है, सो देन इट इज कॉमन नाउन. ओके, टीचर इज ऑल्सो अ कॉमन नाउन. कोलकाता इज अ प्रॉपर नाउन, बट व्हेन वी से अ सिटी, okay, then it's a common noun. Now here, he work in a hotel. We write only hotel here. We not write a hotel name. When we write hotel name, then it's come proper noun. Otherwise, hotel is our common noun. Got it? I hope you got it, the point. What is a proper noun and what is a common noun? Okay. So come, let's see the next third number, collective noun. Collective noun refer to a group or collection of living or non-living thing. Collective noun वो होता है जब हम कोई भी नॉन लिविंग थिंग या लिविंग थिंग का हम कलेक्शन करते हैं, तो उस ग्रुप का जो हम नाम रखते हैं. ठीक है, जैसे शिप हैं, ढेर सारी शिप्स खड़ी हैं, तो हम उनको ग्रुप ऑफ शिप नहीं बोलेंगे, तो हम उनके ग्रुप का नाम हम फ्लीट बोलते हैं. ओके, लाइक दैट सोल्जर्स जब एक साथ है, उनका ग्रुप है, वहाँ पे ढेर सारे सोल्जर्स हैं, तो हम वहाँ पे बोलेंगे आर्मी ऑफ सोल्जर्स. ओके, पीपल जब ढेर सारे लोग हैं, तो हम वहाँ पे क्राउड ऑफ पीपल बोलेंगे. ठीक है, हर एक कलेक्शन का लिविंग थिंग और नॉन लिविंग, हर एक कलेक्शन का ग्रुप का अलग नेम होता है, लाइक फ्लीट, आर्मी, क्राउड एंड फ्लॉक ऑफ शीप्स. अगर शीप्स हैं, बटरफ्लाई का स्वैम होता है. ओके, नाउ लेट कम सी नंबर 4. What is abstract noun? Abstract noun is the name of a word which indicate quality, feeling or state or person or thing. Example, Ram had fear of falling down. Who does not want freedom? The patient suffered from pain. I always speak the truth. So students,
एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं? जिसमें हम क्वालिटी, फीलिंग या स्टेट ऑफ पर्सन के और थिंग्स की बताते हैं. मीन्स हम जिस चीज को लाइक दैट छू नहीं सकते, वी कांट सी इट. इन शॉर्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज दैट विच वी कांट सी एंड कांट टच. जिसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होते हैं जिसको हम छू नहीं सकते, जिसको हम टच नहीं कर सकते, सिर्फ हम फील करते हैं या हम किसी के क्वालिटी बता रहे हैं. मीन्स लाइक दैट हियर फियर. फियर डर को बोलते हैं. सो हम डर को छू सकते हैं? नो. क्या हम उसको देख सकते हैं? नो. सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होते हैं जिसको हम छू ना सकते हैं ना देख सकते हैं, सिर्फ बस हम जिस चीज को फील कर सकते हैं. लाइक हियर फ्रीडम, हियर पेन, truth, and some other word is beautiful, kindness. All these word are. Now come in number 5, material noun. So what is a material noun? Material noun refer to the materials of which things are made. Example, the ring is made up of silver, the table is made up of wood, we wear woolen clothes in winter, plastic bowls are light in weight. So रिंग किस चीज की बनी होती है? सिल्वर की. तो इसमें कौन सा मटेरियल यूज हुआ है? सिल्वर. सो सिल्वर इज आर मटेरियल नाउन. मटेरियल नाउन रिफर टू द मटेरियल ऑफ विच थिंग्स आर मेड. मतलब जो चीज बनी है उसमें किस चीज का हमने मटेरियल यूज किया है, उस मटेरियल को हम, उस वर्ड मटेरियल वर्ड को हम मटेरियल नाउन बोलते हैं. ओके. सो स्टूडेंट्स, here are your exercise. Number 1, given below are some nouns. Classify them into abstract and material noun. Here are your mix-up of abstract noun and material noun, and you have to separate all material, abstract noun and material noun in each column, in their column. Like oil, truth, honesty, iron, plastic, kindness, wood, courage, diamond, depth, happiness, copper, cement, clay, freedom, and darkness. So one I will do for you, and rest you have to do it yourself. Abstract noun. So number 1 is oil. Oil is which type of noun? Abstract or material? Oil is material noun. You have to write like this. And next is truth. Truth means सच्चाई. तो सच को हम देख सकते हैं? नो. ना छू सकते हैं. सो ये क्या है हमारा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन. राइट हियर truth. Now come in number 2 exercise. Find the group of name each noun. Number 1, a group of people. Number 2, a group of thieves. Number 3, a group of birds. Number 4, a group of fish. Number 5, a group of musicians. Number 6, a collection of sticks. Number 7, a collection of books. Number 8, a collection of animals. So students, you have to find all the groups name of given of here which I have given to you, and write the each group's name, collection of groups name here. Like that one I will do for you. A group of people. So हम group of people को क्या बोलते हैं? ढेर सारे लोग हैं तो हम group of people को क्या बोलते हैं? Crowd. So you have to write like this. And now you will do all this with yourself. Now number 3rd exercise is underline the common noun and circle the proper noun in the sentences given below. Here are your common noun and proper noun. You have to underline common noun and circle the proper noun. Number 1, my school name is Bright Academy Public School. Number 2, Diwali is a great Hindu festival. Number 3, we live in Haryana. Number 4, the babies are born in the hospitals. Number 5, Ravi is a good boy. And number 6 is December is a cold month. So this exercise I will not tell you, and you have to do it yourself. Now in next class we will study
some new topic. Now do your work and bye bye.